Sutra number 11. Dhyana heya stadvrittayah. Dhyana heya stadvrittayah. In the last sutra, Rishi Patanjali has explained how to do prati prasav, how to go to root cause of the origin of the klesha. And in this sutra, Rishi is giving technique. And that technique is dhyan. You can only go to the origin of the klesha through meditative mind. To understand your mind, to eradicate kleshas and vrittis, that is only possible in meditative mind. To go beyond klesha, klista and aklista vritti, meditative mind is needed. मन की उस शांत अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में ही हम क्लेश और वृत्ति के परे जा सकते हैं. जो भी क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति है, जो भी पंच क्लेशों से हमारा मन ग्रसित है, उसके ओरिजिन तक जाने के लिए ध्यानस्थ अवस्था जरूरी है. It's a vice versa. If you have kleshas and vrittis in your mind, then dhyan is not possible. And if you achieve that dhyanastha state of your mind, only you can understand the root cause or the origin of the kleshas. And सबसे पहले तो हमें हमारे मन को समझना पड़ेगा. Because our mind is full of kleshas and vrittis, and that restricts us to go towards our own divinity. है ना? ये मल, विक्षेप और आवरण ही बीच में आ जाते हैं हमारे और हमारे ईश्वर के मिलन के बीच में. और हमारा मन पूरा जीवन के जोल में उलझा हुआ है ना. Most of the time our mind is so much engrossed in all the worldly affairs, and rarely it is in the calm state of mind. एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बाढ़ का उदाहरण ले, फ्लड, तो फ्लड का पानी कैसे होता है? पूरे जोश में, पूरे फोर्स में चले जाता है. और अगर बाढ़ के पानी में कोई आदमी तैर रहा है या तो चला जा रहा है, तो वो आदमी का कंट्रोल रहेगा क्या उसकी गति पर या उसकी दिशा पर? ये तो बाढ़ का पानी तय करेगा ना कि वो कहाँ जाएगा, कितना पीटेगा, कितना उछलेगा, कहाँ पर पहुंचेगा. ये सारा आदमी के हाथ में है ही नहीं. बाढ़ का पानी उसकी दिशा नक्की करेगा. तो just like that, when our mind is full of all these kleshas and vrittis and these and that, it's out of control. It's just like a water of a flood. And then to reach at the highest level of the meditative mind is not at all possible. These kleshas are present in your mind. They will act like a foreign body to your eyes. If something small goes into your eyes, is enough to blur your vision. And here we are having kleshas, and then to 5 kleshas. And in udar form. So it's very difficult to achieve that meditative state of mind. At first place, when we understand that my mind is full of klesha and vrittis, then you start working towards that. You start making them weak. ना तनु करने की कोशिश हम करेंगे. And when your kleshas are tanu, then you can understand more about it. And you can be successful to achieve that meditative mind. है ना? ये क्लेश जो है उसको डाइटिंग कराना पड़ेगा. To weaken that क्लेश, है ना? बहुत मोटे हो गए होते हैं क्लेशस. So उसको
वीक करने के लिए क्लेशा को क्या करना पड़ेगा? डाइटिंग. सो देन ओनली यू कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. यहां पर हमने जो बात कर रहे हैं हम कि ये करना पड़ेगा, दीज आर द टेक्निक्स, बट हाउ? दैट इज द स्किल. यू नो, स्किलफुली whenever the situations comes, you have to understand and observe your mind. ना कि जैसे ही गुस्सा आया या तो किसी के प्रति राग और द्वेष हुआ, कोई हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें उसके प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष होने लगेगी या तो जेलसी होने लगेगी. And to just with awareness observe that state of mind, the jealous state of mind. You'll slowly and steadily you'll come out of that state. And once you are successful to weaken that klesha, and when can you successful to weaken that klesha or to make them diet? When you observe them with awareness. And by not feeding them. And firmly decide that not to create any negativity for that person in my mind. Because dvesh is a slow poison. And because of others getting affected by dvesh for people around you or some other people, you are drinking that poison. जिन जिन चीजों के लिए हमें राग होता है, उन चीजों के लिए द्वेष होना बहुत ही स्वाभाविक है. हर एक माँ को अपने बेटे के लिए बहुत ही राग होता है, अटैचमेंट होता है, और वो बेटा भी अपनी माँ को बहुत ही पूछता है या प्यार करता है कि मेरी माँ ही सब कुछ है. बट वही राग एक दिन जब बेटे की शादी होती है तो फिर बेटा माँ के बजाय पत्नी पत्नी करने लगता है, और तब क्या होता है? वही पुत्र के लिए, बेटे के लिए जो राग था मन में, वही द्वेष के रूप में चेंज हो जाता है. जब जब माँ को बेटे के लिए राग है, तब तब बहू के लिए द्वेष होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पर एक फियर आ जाता है. अभिनिवेश टेक्स ओवर ना, कि ये अब मेरे बेटे को ले जाएगी. मदर इन लॉ विल ऑलवेज फील दैट नाउ दिस डॉटर इन लॉ विल टेक अवे माई सन. Right? So whenever you have any attachment, whenever you cling on to any raga, dvesh is likely to happen. And similarly, daughter-in-law will have dvesh towards mother-in-law, that my husband, she will take away my husband. So this is the way rag and dvesh, they are just attached together. They go hand in hand. When we understand our mind, the tendencies of our mind, we just save our mind from this kleshas, from this raga dvesh, from this abhinivesh, from this avidya. And this avidya can be only ruled out when you go back to the origin. With avidya में लीन होने से ही अविद्या को दूर कर सकते हैं. अपने मन को राग द्वेष से मुक्त रखने के लिए पुनः पुनः संसार की असारता का चिंतन, यही मार्ग है. Detachment towards this worldly affairs, to get your mind free from attachment and to practice detachment from this world is the only way. And जब हमको ये भी समझ में आ जाए कि मेरे जीवन में कितने दिन बचे हैं, and the eye opens immediately, and we come to know that my life is just like a sesame seed in the whole eternal journey of the life. And at that moment, we'll not be ready to caught up in all the kleshas and vrittis. And you will work towards more and more meditation to get your mind free from this rag, dvesh and all these kleshas. शिष्य को उर्दू में क्या कहते हैं? मुरीद. और मुरीद मीन्स मरा हुआ. मरा हुआ मीन्स जिसका मन मर चुका है. The person who is a disciple
whose mind is completely dead, without kleshas and without vrittis. And when you do anything without expecting anything, then only you can achieve that calm state of mind. Because if you are doing something expecting अस्मिता, है ना, कुछ भी सम्मान के लिए किया या तो नाम के लिए किया, तो पूरी दौड़ लगा दी अब पहले नंबर के लिए, then that will create lots of asmita in your mind, and that will not allow your mind to rest. When kleshas gets weakened, if they are abundant from the origin, avidya में ही लीन हो जाए, तब ही मन पूरी तरह से मुक्त रह सकता है. So here Rishi has given a beautiful technique of just meditation. In the dhyanastha avastha, you are able to prati prasav. Namaste.